No, 5.33 में स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग से एक मंकी अटैच्ड है, ये मंकी मान लो, मास 40 kg है मंकी का, दैट मीन्स वेट ऑफ द मंकी इज 40 g। स्ट्रिंग से जा रहा है तो ऊपर एक टेंशन एक्ट कर रही होगी। अब अलग अलग केसेस में ये अलग अलग तरह से जाता है। फर्स्ट केस आपको दिया हुआ है, ये ऊपर जा रहा है मंकी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये भी गिवन है कि आफ्टर 600 न्यूटन स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगी। तो आप इसे सिंपली लिख सकते हैं T माइनस 40G इज 40A। सो आप लिख सकते हैं T माइनस 400 इज 240। आप इसे लिख सकते हैं T इज 640 न्यूटन। ये टेंशन होगी स्ट्रिंग के अंदर। अब एक चीज और देखनी है, स्ट्रिंग जो मैक्सिमम टेंशन विथस्टैंड कर सकती है, दैट मैक्सिमम टेंशन इज 600 न्यूटन। सो क्या लगता है आपको, स्ट्रिंग ब्रेक करेगी या नहीं करेगी? इसके सो ब्रेक करेगी, ब्रेक कर देगी। सो रोप विद ब्रेक। एक और देखिए सेकंड केस, स्ट्रिंग है, मंकी है, सेम टेंशन ऊपर एक्ट कर रही है, वेट डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है 40 g, बट नाउ इट्स मूविंग डाउनवर्ड्स with an acceleration of 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो इक्वेशन आप लिखोगे, दैट्स 40g minus t is 40a, so it's 400 minus t is 160। so यहाँ से t आ गया 300, not 300, 240 न्यूटन। अब क्या लगता है, क्या स्ट्रिंग ब्रेक करेगी? नो सर, string will not break। In the third part, it is moving with a uniform velocity. Monkey is moving with a uniform velocity, that means acceleration is 0. That's t, that's weight 40g. So you can simply write this as t minus 40g is 40 into 0. So t is 40g. T is 400 Newton। 400 न्यूटन का मतलब है अभी ये ब्रेक नहीं करेगी। Yes, sir. And then the last one, fourth part. Fall downs the rope nearly free under gravity. So this monkey is in free fall. So this is the tension. Downwards is the weight of the monkey, which is 40g. This monkey is in free fall. That means acceleration is equal to acceleration due to gravity. It's going downwards with an acceleration which is equal to g. So the equation of motion would be, it's 40g minus t, it's 40a. Your tension will comes out to be, and a is again equal to g. So that is simply 40g minus 40g, tension would be 0. So this monkey is in free fall. There is no tension in the rope. It will not break. Is it clear now? Yes, sir. Okay, the next out. 5.25. 5. So in 5.35, there is a man standing stationary with respect to a horizontal belt that is accelerating with 1 meter per second square. So it is a belt.
coefficient, and this belt is moving with 1 meter per second square. Let's say belt is moving in this direction with an acceleration of 1 meter per second square. And there's this man. This man is stationary with respect to belt. What is the net force of the man? The coefficient of static friction. This is rough surface. The coefficient of friction is 0.1. अब अगर उसने मेंशन नहीं किया है that this is kinetic or this is static, that means दोनों accelerations exactly equal. अगर वो मेंशन नहीं करता, that means kinetic and static frictions are exactly equal. Okay. Now, अब ये बताओ, ये जो man है, this is on a belt which is accelerating. Man is in inertial frame or he is in non-inertial frame? This man is on an accelerating belt. That means man is on accelerating frame, which is non-inertial. तो सर ये सूडो फोर्स लगाए. So pseudo force will act on the man. Pseudo force will act on the man. And the pseudo force is its mass of man, which is capital M, multiplied by the acceleration of frame. So that's 65 multiplied by 1, which is 65 Newton. And the pseudo force will act in a direction which is opposite to that of motion. It's exactly acting in a direction which is opposite to that of motion. Now, along with this pseudo force, this man is over a rough surface. So frictional force will act on the man. So the downwards is mg, upwards a normally action is in. Man की tendency है to move in the left hand side direction. So to the right hand direction, एक friction act करेगा. You can simply write your frictional force as mu n, or you can write this n as mg. So friction is mu mg. So the friction is, it's 0.2. Mass of man is 65 and this is 10. So the frictional force that's acting on the man is, this is 2 into 65, which is 10, 30, 130 Newton. That means, so क्या लगता है, man move करेगा या man stationary रहेगा? Yes. क्या लगता है आपको कि man move करेगा और remain stationary रहेगा? देखो pseudo force is 65 Newton and friction is 130 Newton. सर नहीं करेगा. Pseudo force is less than friction. So man will not move. अब वो कह रहा है किस acceleration, means at an acceleration of 1 meter per second square of the belt, man does not move. But किस acceleration तक man stationary रह सकता है? Man will remain stationary. Man will remain stationary. Will remain stationary with respect to belt if friction is less, pseudo force is less than or equal to the frictional force, right? जब तक pseudo force friction से कम है, man stationary रहेगा. Yes. This mass of acceleration, which is less than or equal to this frictional force, which is 130 in this case.
So your acceleration would be less than or equal to 130 by m, mass of the man. So the acceleration is 130 divided by 65. So the acceleration is less than or equal to, it's 2 meter per second square. So man will remain stationary until the acceleration of this belt is 2 meter per second square. So up to this acceleration, man will remain stationary with respect to the belt. Clear? देखो आंसर्स एनसीईआरटी के साथ इन पॉइंट 2 पॉइंट 3 से डिफर कर सकता है. द ओनली रीजन इज आई एम टेकिंग जी टू बी 10. मे बी इन एनसीईआरटी उसने जी 9.8 लेकर सॉल्व किया हो, बट दैट डजंट नॉट मैटर. Okay, sir. नेक्स्ट आउट. Sir, 5.35. 5. So उसको रब कर दूं. Yes, sir. So क्वेश्चन 5.35 ये क्या कहता है. So देखो 5.35 में एक ट्रॉली है. Let's say this is the trolley. This trolley starts from rest and accelerate with 0.5 meter per second square for 20 seconds. Means this is the state of trolley when the time is in between 0 to 20 seconds. ये accelerate करे और इस ट्रॉली के ऊपर आपने एक ब्लॉक रखा हुआ है. The mass of the block is 15 kg. 15 kg block is placed on the trolley. Afterwards, after these 20 seconds, जो ट्रॉली है it's moving with some constant velocity. If your time is greater than 20 seconds, then this trolley is moving with some constant velocity. तो आपसे कहता है दो ऑब्जर्वर्स हैं. One observer is on the ground, observer 1, this one is on ground. Then you have observer 2 and this observer 2 is on the trolley. Again, you have an observer 1, this observer 1 is on the ground. Then you have observer 2, this observer 2 is on trolley. So you have to discuss the motion of this block with respect to observer 1 as well as observer 2. And this as a rough surface. So देखो इस केस में इस ब्लॉक के ऊपर एक सूडो फोर्स एक्ट करेगी, राइट? तो पहले मैं सॉल्व कर रहा हूँ. इट्स 0 to 20 सेकेंड्स. आप कैलकुलेट कर सकते हो कितनी सूडो फोर्स एक्ट कर रही होगी. Pseudo force is mass of body multiplied by the acceleration of frame. So that's 15 into 0.5, right? That's 15 into 0.5, which is 7.5 Newton. The next is friction, which is acting over the body, which is mu m, which is mu mg. So here mu, coefficient of friction is 0.18. Mass is 15 kg, G is 10. So the frictional force acting over it is, it's almost 27 Newton की friction force acting. This is friction and this is pseudo force, which is 7.5. So again, pseudo force is less than friction. क्या लगता है, body will move or it will remain at rest? Body will Sir, rest. remain at rest, will remain at rest with respect to trolley.
सो जो ऑब्जर्वर 1 होगा, ऑब्जर्वर 1 को भी यही दिखेगा कि ब्लॉक रेस्ट में, और ऑब्जर्वर 2 जो ट्रॉली पर बैठा हुआ है उसे भी लगेगा ब्लॉक रेस्ट में, बट ऑब्जर्वर 1 को एक चीज और दिखेगी, ऑब्जर्वर 1 तो ग्राउंड पर है सर, तो ऑब्जर्वर 1 को लगेगा कि ब्लॉक इज एक्सिलरेटिंग विद ट्रॉली। वो ग्राउंड पर उसे ट्रॉली एक्सिलरेट करती हुई दिखेगी तो उसे लगेगा ब्लॉक भी एक्सिलरेट कर रहा है, बट 2 को लगेगा कि ब्लॉक इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। अब कुछ टाइम के बाद ये यूनिफॉर्म मोशन में आ जाता है, t इज ग्रेटर देन 20 सेकेंड्स। जैसे यूनिफॉर्म मोशन में आया, सूडो फोर्स कोई 20 सेकेंड्स पर ट्रॉली इज इन यूनिफॉर्म मोशन। Now, if the trolley is in uniform motion, that means acceleration of the trolley is zero. There is no acceleration of the trolley. No acceleration means no pseudo force. कोई pseudo force नहीं है, कोई relative motion नहीं होगा तो static friction अपने आप को zero adjust कर देगा. So अब भी जो होगा, body block will remain at rest, with respect to trolley. तो जो ऑब्जर्वर 1 है ग्राउंड पर खड़ा है, उसे दिखेगा ब्लॉक इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ब्लॉक इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और जो ऑब्जर्वर 2 होगा उसे लगेगा कि ब्लॉक इज एट रेस्ट. यस, क्लियर है? Yes, sir. और कोई डाउट? Nice, sir. ठीक है, थैंक यू, बाय. Okay, thank you, sir.